So in the previous video we saw how backtracking search works. Now in this video we're going to talk about some techniques, some जिसके जरिए हम vanilla backtracking search को बेहतर बना सकते हैं in order to have a better intuition about how backtracking search works. ठीक है जी. So we're going to talk about जनाब के कैसे किस variable. Let me start by giving you demonstration how backtracking search works, and then we're going to look into how can we improve backtracking search. So we are going to use this applet provided by aispaces.org. Again, I'm going to talk about the implementation in a separate video. So to make things simpler, I'm just going to demonstrate this video from the applet. So I'm going to load a sample CSV. So I'm going to load this nQueen problem, and we're going to use this simple backtracking search to find it. So again, we are going to say कि जनाब के so we are using and let's going to solve, and we're going to solve using simple backtracking search. So again हम simply backtracking search जो है उसको जरिए से solve कर रहे हैं, ठीक है. तो याद रखिएगा it's a simple backtracking search. So let's start. So again we choose again, so I'm not going to solve using our consistency. We just use to solve using simple backtracking search. Sorry for the interruption. Again, I have to use the backtracking search in this in from my own code. So again, let me just show you the simple backtracking search and how it works. So again, I'm going to use the Quinn same CSC problem. I'm going to start with the 4 Quinn problem ताकि आपके लिए समझना आसान हो. So not going to do anything fancy. Simple backtracking search जिसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. And we're going to figure out जनाब के. So we do not have any inference procedure. फिर सिंपली जनाब हम मालूम करेंगे जनाब के कितना टाइम लगा और सोल्यूशन जो है हमें क्या मिलता है. अब जो शो यू जनाब किस तरीके से काम करे. तो लेट मी स्टार्ट विद. सो यू कैन सी जनाब के दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो अगेन वी स्टार्ट विद क्वीन इक्वल टू 1. हमने 1 असाइन किया, क्वीन 2 को हमने 1 असाइन किया. 1 इज नॉट कंसिस्टेंट विद 1. क्वीन 1 दोनों एक ही रो में नहीं हो सकते, तो क्वीन 1 की वैल्यू चेंज हुई, 2 पे आई, 2 भी नहीं हो सकते, 3 आई, 3 भी नहीं हो सकती, बट 3 हो सकती है. सॉरी, 3 वर्क्स. एंड वी स्टार्ट विद क्वीन 3. जब क्वीन 1 1 है, क्वीन 2 3 है, तो क्वीन 3 ना 1 में, ना 2 में, ना 3 में, ना 4 में. वी हैव टू बैक ट्रैक टू क्वीन 2. उसकी वैल्यू चेंज करी 4. फिर क्वीन 3 को देखा 1 में आ गई, 2 में आ गई, बट टू में आने के बाद कंस्ट्रेंट्स कोई सारे सेटिस्फाई होते हैं. क्वीन 4 को फिर हमने रखना शुरू किया, तो 1 में नहीं आया, 2 में नहीं आया, 3 में नहीं आया, 4 में नहीं. तब हमने क्वीन वैल्यू 3 में चेक किया, तब भी क्वीन 4 की वैल्यू नहीं मिली. क्वीन 3 को 4 में चेक किया, तब भी क्वीन 4 की वैल्यू नहीं मिली. तो हमने वापस बैक ट्रैक किया क्वीन 2 पे. क्वीन 2 की सारी वैल्यू देख चुके हैं, तो हमने बैक ट्रैक किया क्वीन 1 पे. क्वीन 1 की वैल्यू को 2 किया, 1 की वैल्यू को 1 से हटा के 2 किया. फिर क्वीन 2 को 1 पे देखा, 2 पे देखा, 3 पे देखा, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था. 4 पे हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हुआ. फिर क्वीन 3 को 1 पे देखा, वो भी सेटिस्फाई हुआ. फिर क्वीन 4 को 1 पे देखा, नहीं मिला. 2 पे देखा, नहीं मिला, मगर 3 पे सोल्यूशन जो है वो आपको मिल गया. तो कैन यू कैन ड्रॉ दिस थिंग. You will find जनाब के queen you can draw this configuration, and when queen 1 represent the first column and 2 represent the second row, queen 2 represent the second column, fourth row, 3 is the third column first row, and fourth is the fourth column and third row. And you can see जनाब के how these things would work. ठीक है. Again you can see if I even solve a solution of 10 queen problem, so there is a high chance that I will find a solution very quickly. So in about half a second or less than half a second we can find a solution. Let's crank it up to 20. So you can see in the 20 is a bit, it will get a solution, but it will take some time. So again, I'm not going to worry about it. Again, I'm going to do some improvements and see whether we can find a solution a bit more better than this thing. Okay. So again, map coloring. Again, if you can see the map coloring as well. If I can show you the map coloring CSV. So the same Australian map, it's pretty so. So can we start with Western Australia red, and you can see okay, with very simple time we can find a solution for the map coloring problem as well. So you can probably go through this this option and figure out कि जनाब के कहाँ पे backtrack जो है वो हो रहा है. ठीक है. So again, we can improve our backtracking search by making use of these heuristics. Heuristics are used to decide 4 things, couple of things. Okay. First, कि कौन सा वेरिएबल पहले सिलेक्ट हो, कौन सा वेरिएबल बाद में सिलेक्ट हो, एंड वी विल सी, यू विल बी सरप्राइज टू सी जनाब कि ये छोटा सा फैसला जो है वो कितना इम्पैक्ट करेगा आपकी डिसीजन, आपकी एफिशिएंसी को, आपकी वेरिएबल असाइनमेंट की. देन किस ऑर्डर में जो वेरिएबल आपने सेलेक्ट किया है उसकी वैल्यूज को किस ऑर्डर में हमने देखना है.
फिर क्या हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं फिर फेलियर आ रहे हैं? जैसे आपने देखा जनाब के जब हमने क्वीन एंड फोर क्वीन प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो क्वीन वन की वैल्यू वन के लिए क्वीन टू की वन वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं थी बिकॉज इट वाज अ फेलियर, बट हमने फिर भी चेक किया। क्या हम इसको पहले डिटेक्ट कर सकते हैं? सही है। एंड देन कैन वी मेक यूज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम टू इम्प्रूव द सर्च? तो क्या स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम जब हमने कंस्ट्रेंट ग्राफ बनाया था, क्या उसके जरिए से कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो आ सकती है, नहीं आ सकती? एंड वी गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स in this video. Okay, so which variable to select first? So again, and the heuristic that we have is the minimum remaining value is heuristic, and it tells you जनाब के वो वेरिएबल जो कि सबसे पहले जिसके सबसे अ, जिसके सबसे कम ऑप्शन रह गए उससे पहले सेलेक्ट करें। तो अगेन इसका इसका मतलब जनाब को जिसकी सबसे कम वैल्यूज रह गई, जो सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट है, उसको सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे, और जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यूज रह गई हैं उसको आप बाद में रखेंगे बिकॉज इट हैज मोर रूम टू प्ले विद। तो उसके पास कम रूम है, उसके पास ज्यादा रूम है जनाब, तो दैट्स व्हाई दिस ह्यूरिस्टिक वर्क्स। तो अगेन फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्ट विद दिस मैप कलरिंग प्रॉब्लम, तो आपने किसी को भी चूज कर लें बिकॉज सबके एक ही जैसे वैल्यूज बचे हैं। नाउ यू कैन सी आपको यहाँ पे दो वैल्यूज बची हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज बची हैं, रेड इज गॉन, तो यहाँ पे सिर्फ बचा है ग्रीन और ब्लू, यहाँ पे ग्रीन और ब्लू, तो यू कैन क्लियर आइदर वन ऑफ देम। व्हेन यू चूज वन ऑफ देम देन दिस इज ओनली वन वैल्यू रिमेनिंग, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे तीन है, तो यू विल सेलेक्ट दिस वैल्यू एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, so let me show you a small demonstration के why it works. So let me show you why it's not showing to me. Yeah. So again, I can show you without this variable ordering, and similar 10 queen problem को हम देख लेते हैं। So the example you showed was with variable ordering, and now let's see without variable ordering. So again it is the solution is found. Solution is found, and you can see it's about 0.03 seconds. And if we use variable ordering, then it probably will going to be a bit more faster than this. Again, so it's a bit more faster, a bit more less number of iterations, but it's not very evident. But we can see this thing when we go forward and look into much bigger problems. So again, let's suppose if we take an example of 15 and we are not using the variable ordering. Okay, let's see how how fast it is. It's taking a time 1.26 seconds, and let's see if we can use variable ordering. So again, more or less the same thing. It's not very evident, but we're going to see this thing more evident when we talk about a bit more complex problems to solve it. Okay. So the least constraining value is once you have selected a value, then if you have two choices, blue or red, then which will you choose? Again, the which you should choose red because it has no impact on this value. But if you choose blue, then this is gone and you have to backtrack. So that's why we will choose red as compared to blue, and this is going to be much helpful for us. Okay. So can we detect failure early? And the answer is astoundingly yes. And we're going to talk about two algorithms that we are